Good afternoon, students. आज आम ओडिशा स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर्स जो कवर करे आज टिके एट ए टाइम 3टा वीक रो कवर करबा कहीं ना क्लास है नथिला प्रीवियस 2टा वीक सो क्लास स्टार्ट करबा आगु मते फर्स्ट कहि दियंतु कि मोर ऑडियो मु जहा कहूची सेटा क्लियर अछि कि नै एंड जो पीपीटी क्लियरली शो होची कि नै स्क्रीन रे एनी वन ऑफ यू लाइव चैट रे मते थरे कंफर्म कर देले मु सेशन टी स्टार्ट कर देबी कि ऑडियो आ वीडियो दीटा जाको क्लियर अछि कि नै ओके फाइन समस्ते कहउचंदी क्लियर अछि मु बे डिस्कशन क्लास स्टार्ट करूची क्लास स्टार्ट करबा पूर्व मु किछि ब्रीफली टिके इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एटी प्रोवाइड कर दोची ओपीएससी मेंस 2024 पई कि जो माने प्रिपेयर होतिबे तीनटा जक जीएस ऑप्शनल एंड एसए पई कि कोर्स अवेलेबल अछि मेंस आंसर राइटिंग इंक्लूड अछि देन मेंटरशिप प्रोग्राम भी इंक्लूड अछि एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 20th October 2025 फर्दर डिटेल्स पई कि ऑफिस को कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स अवेल करि परिबे जहाँ भी मुझे पढ़ेबी तार पीडीएफ डाउनलोड करि परिबे बाय क्लिकिंग द लिंक इन द कमेंट सेक्शन जोटा कि क्लास पर अपलोड हो जिवो ओके फर्स्ट आम देखिदबा आज हमर कोन कोन टॉपिक्स कवर करिवार अछि 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ऑब्जर्व्ड इन ओडिशा आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स आज टिके अछि सो ट्राइबल आर्ट फ्रॉम इडिताल gains global recognition. Odia inscriptions discovered in Birupa Chitrotpala Basin. Green technology for sustainable black terracotta NIT Rourkela innovation. Odisha shines at the 6th National Water Awards and JSJB Awards 2025. Green Heroes Summit 2025 uniting climate warriors in Odisha. UNICEF partnership to establish tribal communication cell. Ratha Yatra launched in 5 districts to promote scientific land use. Then Odisha Vikas Conclave, 26th Odisha Science and Environment Congress begins with focus on the SDGs. Next amara achi revival of near extinct native silkworm environmental topic regarding species in news which is very important for prelims. ओडिशा आईटी पॉलिसी ऊपर न्यूज अछि जहा की एम करिछि फ्यूचर रे 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करिया पई ओडिशा emerging as a clean energy destination EY Asocham reports are very important for prelims. Odisha extends enhanced Manrega support till 2028 to 2029. Brand in India conclave curtain raiser held at IIM Sambalpur. Singhdeo calls for adoption of climate resilient farming techniques. Clear? Okay. Moving to our first current affairs. Green technology for sustainable black terracotta. NIT राउरकेलार एटा गोटे इनोवेशन एबे देखिबा एटा न्यूज रे कोन पई अछि NIT राउरकेलार जो रिसर्चर्स माने रहिले से माने पेटेंट करिसंती गोटे इको फ्रेंडली मेथड टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस ब्लैक टेराकोटा वेयर्स हां मु क्लास स्टार्ट करिया पूर्व आ गोटे कथा कहि दउची कि जदी केबे भी मझिरे लागिवो कि एक्सप्लेनेशन बहुत स्पीड मु कहूची तो do let me know in the live chat okay
And the innovation aims to revive traditional black terracotta crafts using what? Using sustainable and modern scientific techniques. Traditional black terracotta craft को केमिति revive कराजिबो ए innovation टी आ उपरे aim करिछि. ये जो पेटेंटेड प्रोसेसटा रहिला सेटा सिग्निफिकेंटली पोल्यूशन को रिड्यूस करिवो, फायरिंग टाइम को रिड्यूस करिवो बा कट करिवो. इट विल कट द फायरिंग टाइम फ्रॉम 2 days टू लेस देन 7 hours. जोटा आगुरु 2 दिन लागुतला सेटा एबे लेस देन 7 hours लागिवो. बैकग्राउंड बैकग्राउंड हैला टेराकोटा माने कोन? टेराकोटा होची बेक्ड अर्थ, इटालियन ओरिजिन एटा. इन इंडिया टेराकोटा इज वाइडली यूज्ड फॉर टेराकोटा हमर इंडिया रे कोन पे यूज हुए? किचन वेयर रे यूज हुए, रूफिंग टाइल्स रे, टेम्पल आर्किटेक्चर बा टेम्पल स्कल्पचर्स रे यूज हुए. रेड टेराकोटा सबुठार बेसी कॉमन, प्रोड्यूस्ड बाय फायरिंग आयरन रिच क्ले इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जोटा कि कुहा जाय हमर ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हेले तार रेड कलर टा आसे. ब्लैक टेराकोटा पटरी जो अच्छी सेटा गोटे ट्रेडिशनल क्राफ्ट हिसाब रे हमें देखि थाउ इन निजामाबाद उत्तर प्रदेश, निक्सी विलेज तिब्बत. ओके, एगुडिक से माने यूज करंती ब्लैक ग्लेज्ड पटरी पई यूज करंती, स्मोक बेस्ड ब्लैकेनिंग टेक्निक रे से माने यूज करंती. ट्रेडिशनल मेथड रिक्वायर, ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन रिक्वायर करे? फर्स्ट तो ऑर्गेनिक फ्यूल्स दरकार, जेमती काउ डंग हे गला, स्ट्रॉ बा वुड चिप्स. स्किल्ड लेबर थिबा दरकार, अनस्किल्ड लेबर एटा करि परिबे नाही. लॉन्ग फायरिंग टाइम नियरली 48 आवर मु आमे देखिले कि 2 days रु सेटा कमे की लेस देन 7 hours करिबा तांकर टार्गेट अछि. तो तांकर फायरिंग टाइम बहुत लॉन्ग थाए, नियरली 48 hours. एक्सपोजर टू टॉक्सिक गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स बा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हे गले. आपको डेवलप किए करछंती प्रोफेसर. दिस नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, मु खाली एमती कॉन्टेक्स्ट पई देइछि फॉर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कि प्रोफेसर स्वदेश कुमार प्रतिहार, शिव कुमार वर्मा, रूपेश मंडल. की इनोवेशन कौन? इनडायरेक्ट हिटिंग से माने करिवे ऑफ टेराकोटा आइटम्स इन एयर डिप्लीटेड और वैक्यूम चैम्बर. ए जो नुआ मेथडटा अडॉप्ट करा जाउची आर फीचर्स हैला कि ओपन पिट फायरिंग रो आ कोनसी नीड हबनी. No need for open pit firing, eliminates direct exposure to smoke and toxic emissions. आगुरु जो toxic emissions रो exposure थिला सेटा ताकू eliminate कर देबो totally. Produces sustainably manufactured black terracotta with similar aesthetic and quality. Quality और aesthetic रे compromise हबनी, किंतु black terracotta sustainably manufacture हबो. एटा combine करूची traditional knowledge, traditional artisan knowledge और modern engineering and scientific design. एडवांटेज है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिले कि टॉक्सिक गैस रो एक्सपोजर एलिमिनेट हबो. सो इट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली, नो रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक दीज, रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली. हेल्थ बेनिफिट्स, जेतेबेले टॉक्सिक गैस एक्सपोजर एलिमिनेट हे जिवो तो नो स्मोक एक्सपोजर फॉर आर्टिसंस, जोटा तांको हेल्थ ऊपर गोटे एडवर्स इंपैक्ट पकोतला सेटा पकेइबनी. सेफर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड हबो. टाइम एफिशिएंट 48 आवर्स रु लेस देन 7 hours previously discussed. Sustainable development, low dependence on organic solid fuels like cow dung or straw. क्वालिटी प्रिजर्व हबो, एस्थेटिक और क्वालिटी रे किछि भी फरक पड़ुनी, सस्टेनेबली मैन्युफैक्चर भी होउची, सेही सेम शाइन, कंट्रास्ट और फिनिश भी दिया जाउची टू ट्रेडिशनल ब्लैक टेराकोटा. रिवाइव्स द डाइंग क्राफ्ट, मेक्स द क्राफ्ट कमर्शियली वायबल एंड अट्रैक्टिव फॉर आर्टिसंस. डिसएडवांटेज बा किछि चैलेंजेस रहिछि, जेमति कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट. जे कोनोसी जिंस स्टार्ट करिया पूर्वरु किछि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बा सीड इन्वेस्टमेंट लागे. जो वैक्यूम चैम्बर को यूज करा जाउची ए नुआ मेथड रे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ता पई दरकार फॉर द वैक्यूम चैम्बर एंड मॉडर्न इक्विपमेंट. ट्रेडिशनल आर्टिसन जो माने रहिले तांकु ट्रेनिंग प्रोवाइड हबा दरकार टू अडॉप्ट द न्यू मेथड्स, नहले से माने ऑटोमेटिकली तो नुआ मेथड रे बनेबा स्टार्ट करि परिबेनी. दे नीड ट्रेनिंग. पॉसिबल रेजिस्टेंस टू चेंज as traditional methods are deeply rooted in cultural practices. Electricity dependence may be a challenge in rural craft clusters. Okay, एबे हमें गोटे MCQ सॉल्व करिबा. पर करंट अफेयर्स अंडर रे मु सेही रिलेटेड गोटे MCQ प्रोवाइड करिछि, जोटा कि प्रीवियस करंट अफेयर्स ऊपर रिलेटेड. So try to answer this MCQ in
a particular time frame जेमती मु 10 seconds की 15 seconds देबी depending upon the MCQ's difficulty level आप मु 10 seconds दोची जेहेतु मु एबे जस्ट से टॉपिक टा पढ़ेली MCQ फॉर प्रैक्टिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट समस्त लाइव चैट रे मते आंसर देबे और जो माने रिकॉर्डेड देखिबे तांको पई के आंसर नेक्स्ट क्लास रे प्रोवाइड हबो ओके MCQ फॉर प्रैक्टिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट the newly patented black terracotta technology of NIT Rourkela. First, new technique uses air depleted vacuum chamber for indirect heating. Traditional black terracotta production involves oxidation of ferric oxide to produce black color. The patented method reduces firing time to less than 7 hours. कौन हबा आंसर कौन हबा 10 seconds अछि 10 seconds starts now. Okay, the answer देइछन्ती very good. Detailed answer and explanation, brief explanation will be provided in the next class. So, moving forward, Cyber Safety Campaign 2025 concludes in Odisha. Security ro topic. Why in news? Cyber Safety Awareness Campaign 2025 सेटा पूरा स्टेट रे लॉन्च हेतिला by our CM Chief Minister on 18th October जोटा कि सक्सेसफुली कंक्लूड हेछि गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे कैंपेन रो एम थिला कि साइबर सेफ्टी अवेयरनेस को स्प्रेड करिबा अक्रॉस ऑल द पुलिस स्टेशन लिमिट्स टू कॉम्बैट राइजिंग साइबर क्राइम बुझेला देन बैकग्राउंड कोन ए जो कैंपेन टा लॉन्च हेतिला साइबर कैंपेन व्हीकल्स बी फ्लैग्ड ऑफ हेतिले ए कैंपेन अंडर रे फ्रॉम भुवनेश्वर गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे ए प्रोग्राम टा 19th October रे स्टार्ट हैला एट द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस छत्रपुर इनिशिएटिव कंक्लूड हेछि November 5th रे कवरिंग ऑल द 26 पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट की स्टेक होल्डर्स किए थिले नेम आर नॉट इंपोर्टेंट जस्ट देखि देबे इस जो पुलिस ऑफिसर जंदी पुलिस ऑफिसर्स थिले वेरियस पुलिस पर्सनल वुमेन एसएचजी मेंबर भी थिले मिशन शक्ति मेंबर्स थिले देन स्कूल कॉलेज सीनियर सिटीजन वाइड कवरेज माने बहुत गुडे स्टेक होल्डर्स एथरे इन्वॉल्व थिले आशा अंगनवाड़ी वर्कर्स भी थिले स्टेट लेवल कैंपेन डिजाइन हेथिला टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट साइबर फ्रॉड्स एजुकेट पीपल ऑन सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस रे केमती लोक मानको एजुकेट करा जिवो ट्रेन करा जिवो गाइडेंस प्रोवाइड करा जिवो ऑन रिपोर्टिंग साइबर क्राइम एक्टिविटीज कौन कौन कंडक्ट हेतिला अवेयरनेस मीटिंग कंडक्ट हेतिला सब पुलिस स्टेशन लिमिट्स रे सेशंस कंडक्ट हेतिला बाय साइबर एक्सपर्ट्स ऑन द लेटेस्ट फ्रॉड टेक्निक्स को फ्रॉड टेक्निक्स आजिकली फ्रॉड माने सब यूज करूछंती टू कंडक्ट साइबर क्राइम सो साइबर एक्सपर्ट्स सेशंस कंडक्ट करी सेगुडा बुझेइथिले देन पब्लिक इंटरैक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशंस हेतिला कवरेज रे कौन कौन इंक्लूड थिला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड थिला वुमेन ग्रुप्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीनियर सिटीजन फोरम्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की साइबर सेफ्टी मैसेज डिलीवर्ड नेवर शेयर ओटीपी केबे भी शेयर करिबा कथा नुहे कहा संगरे अंडर एनी सर्कमस्टांस ओके देयर इज नो एक्सेप्शन हियर केबे भी ओटीपी शेयर करिबा कथा नुहे जहाँ भी फोन को बा ईमेल को जहाँ भी सस्पिशियस लिंक आसुची ता ऊपर केबे भी क्लिक करिया कथा नै सो अवॉइड क्लिकिंग ऑन दोज सस्पिशियस लिंक्स एंड अननोन एपीके फाइल्स साइबर हाइजीन मेंटेन करिवा कथा ऑन सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करिवा कथा एंड पासवर्ड्स अपडेट करिवा कथा रेगुलरली फेक डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो आजिकली चलाउचंती तो सेगुडी को ऊपर डू नॉट फॉल फॉर दोज रिपोर्ट साइबर फ्रॉड इमीडिएटली कॉलिंग 1930 ए नंबर रे कॉल करिकी जदि आपन संगे किसी साइबर फ्रॉड हेछि ताको रिपोर्ट करिवे देन यूज ऑफ ऑफिशियल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in एडवांटेज कौन की पब्लिक अवेयरनेस एनहांस होची साइबर क्राइम प्रिवेंशन भी एनहांस होची डायरेक्ट कम्युनिटी आउटरीच पॉसिबल हे परिची जोतरे की सिटीजन मानकर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हेची कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक स्ट्रेंथन हेची वल्नरेबल ग्रुप्स मानको हेल्प मिलुची जेमती हमर सीनियर सिटीजन हे गले स्टूडेंट्स हे गले बा एसएचजी मेंबर्स हे गले से मानको एटा बुझिबारे कि ऑनलाइन थ्रेट्स कोन
enabled faster reporting of cyber crimes through correct channels mu provide kali ki ko number au ko website through ru report kari paribe. So faster reporting of cyber crimes is possible now. Disadvantage कौन रही? First, the vast geographical coverage makes consistent awareness difficult. कहीं ना बहुत geographical coverage बहुत vast रहुची तो consistently एमिति नहीं कि जदि आपण वर्षକୁ ଥରେ awareness campaign चलेले आउ वर्षକୁ आउ 11 months awareness campaign किछि हेलानी लोक माने सब भूली गले now they are unaware कहीं ना daily किछि ना किछि अलगा टेक्नोलॉजी यूज करिकी नुआ नुआ साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड सबू से माने करूचंदी. सो कंसिस्टेंट साइबर अवेयरनेस एथिपाई दरकार जोटा कि डिफिकल्ट. डिजिटल इलिटरेसी इन रूरल पॉकेट्स स्टिल रिमेन्स अ चैलेंज. कहीं रूरल एरियाज रे एबे भी डिजिटल इलिटरेसी अच्छी. इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन ऑफ साइबर क्रिमिनल्स जोटा मु एबे कहली मे रिक्वायर कंटिन्यूअस अपडेट्स. अवेयरनेस ड्राइव्स नीड रेगुलर फॉलो अप. नो वन टाइम सेशंस टू रिमेन इफेक्टिव. एमसीक्यू अटेम्प्ट करो. Read the MCQ and answer accordingly. Question kahichi with reference to cyber safety campaign 2025 conducted in Odisha. Consider the following statements. Statement 1. Campaign was conducted across all police station limits in Ganjam district. Citizens were advised to report cyber fraud through helpline number 1930. The campaign discouraged the use of National Cybercrime Reporting Portal. Answer kon habo? Read the options and answer in 10 seconds. जो माने लाइव अछंती से माने आंसर दियंतु. समस्तଙ୍କ ପାଇଁ आंसर और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मु नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिवि. सुनीता राउत कहउचंती C1 and 3 ओनली. काई आपन को लागुनी कि स्टेटमेंट 2 टा मु एबे जस्ट पढेली आ एटा करेक्ट हेई परिबो बोली. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट जस्ट गिविंग यू अ हिंट. यस आयुष कर आंसर ठीक अछि. ओके वेरी गुड. मूविंग फॉरवर्ड. Odisha shines at 6th National Water Awards and JSJB Awards 2025 environmental topic. Why in news? Odisha गोटे मेजर national recognition एबे achieve करिछि जोटा कि at 6th National Water Awards and the Jal Sanchaya Jal Bhagidari JSJB Awards 2025. RCCF बरहमपुर सर्कल को फर्स्ट रैंक मिली जॉइंट विनर in the best institute other than school and college outside campus category. एटा गोटे कैटेगरी एई कैटेगरी रे बरहमपुर सर्कल RCCF को फर्स्ट रैंक से सिक्योर करछि जॉइंट विनर से. पांचटा ओडिशा डिस्ट्रिक्ट आहुरी से माने भी विन करिसंती. दे हैव वन JSJB अवार्ड्स 2025 फॉर एक्सीलेंस इन वाटर कंजर्वेशन. बैकग्राउंड कौन? नेशनल वाटर अवार्ड्स आपको किए इंस्टीट्यूट करछि अवार्ड टा किए दोछि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस. जोठी मिनिस्ट्री आसीगला सेठी माने अलर्ट हे जिबा कथा नोट डाउन करिया कथा ताकू पूरा मगअप करिया कथा कि को अवार्ड हैला को जेमति कि रिपोर्ट किए काढुची को स्कीम को मिनिस्ट्री बा डिपार्टमेंट अंडर रे लॉन्च होची. मिनिस्ट्री इज वेरी इंपोर्टेंट प्रिलिम्स रे काहे ना जदी से सब अवार्ड्स बा स्कीम्स इनिशिएटिव किछि भी क्वेश्चन रे अछि ताले ऑप्शन रे मिनिस्ट्री श्योर थिबो एंड दे लाइक टू प्ले विथ इट. ओके किछि गोटे भूल मिनिस्ट्री पकई देबे जदी रिवीजन नथिबो इट्स बहुत हाई चांस अछि कि से ऑप्शन रे भूल हबो. सो अवार्ड एम टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. हमर जो प्रेसिडेंट रहिले सी ए अवार्ड टा प्रेजेंट करिसेंती एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. जल संचय जल भागीदारी इनिशिएटिव और जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो रहिला सेटा एनकरेज करूची कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स. RCCF बरहमपुर सर्कल रा अचीवमेंट सिंस अगस्त 2023 रे एटा दिस मच डिटेल्स इज नॉट इम्पोर्टेंट जस्ट खाली ओवरऑल टिके जानि आंतु कि कोन कोन से करिछि. पांचटा फार्म पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट हेछि एतिकी बहुत गुडे मात्रा रे स्टैगर्ड ट्रेंचेस क्रिएट हेछि.
3000 रु अधिका पिट्स क्रिएट हेची ट्रेंचेस से माने क्रिएट करिसेंती डेवलप करिसेंती डेमोन्स्ट्रेट करिसेंती लॉन्ग टर्म एफर्ट इन वाटर कंजर्वेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट मन रखिए कि that they have taken significant steps for water conservation and resource management. Other Odisha recognition मालुसांता गवर्नमेंट नोडल हायर सेकेंडरी स्कूल दामनजोड़ी से थर्ड प्लेस रे अच्छी थर्ड जॉइंट विनर अंडर द बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज कैटेगरी अवार्ड विनिंग डिस्ट्रिक्ट रे किए किए अछंती गंजाम कलाहांडी रायगड़ा कटक एंड मयूरभंज এই जो डिस्ट्रिक्ट गुड़ा को अवार्ड करा जाइछि फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोरवेल रिचार्ज यूनिट्स रेजुवेनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ईच डिस्ट्रिक्ट सेमानकु 25 लाख फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलिछि साइटेशन मिलिछि फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस तो एथिरे कोन रहउछि एथिरे कैश प्राइज रहउछि बा फाइनेंशियल इंसेंटिव रहउछि प्लस साइटेशन भी प्रोवाइड होउछि बोथ प्रोवाइड होउछि केवल पैसा दिया जाउनी कि केवल साइटेशन दिया जाउनी दीटा जग दिया जाउछि की हाइलाइट्स 2024 सेप्टेम्बर रे लॉन्च हेतिला फोकस करूथला वाटर गवर्नेंस रे केमिति कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हबो आउ केमिति वाटर स्ट्रेस को टैकल करा जिवो अचीवमेंट्स कोन 27.6 लाख रिचार्ज स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड नेशनवाइड सरपास द ओरिजिनल टारगेट ऑफ 10 lakhs over 35 lakh ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स अंडर जेएसजेबी कंबाइंड एफर्ट्स एडवांटेज होची कि गोटे होलिस्टिक वाटर कन्वेंशन कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनकरेज होची अक्रॉस इंडिया ग्राउंड वाटर रिचार्ज एनहांस होची सो वाटर स्कैर्सिटी रिड्यूस होची कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एनकरेज करा जाउची एंड अवेयरनेस प्रमोट करा जाउची incentivizes district and institutions to adopt innovative water management practices climate resilience को support करा जाउची एभली रीजन रे जो गुडी को particularly vulnerable to droughts and water stress डिसएडवांटेज रही कि जो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट रहिला सेटा अनइवन रही माने धर गोटे डिस्ट्रिक्ट रे भलसे हेले आ गोटे डिस्ट्रिक्ट रे एते ठीक से चल नाही सो द एफर्ट्स आर अनइवन अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स ड्यू टू रिसोर्स गैप्स कहना माने नहीं ना गोटे डिस्ट्रिक्ट रे जहाँ रिसोर्स थिबो आ गोटे डिस्ट्रिक्ट रे भी सही सेम रिसोर्स थिबो सो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ रिचार्ज स्ट्रक्चर्स कैन बी चैलेंजिंग क्लाइमेट चेंज भी वाटर रिसोर्सेस ऊपर स्ट्रेन प्रोवाइड करि पारे despite the interventions community participation may vary affecting the sustainability of projects mcq attempt the mcq consider the following statements regarding the 6th national water awards and JSJB awards 2025 RCC of Berhampur Circle of Odisha secured first rank joint winner under the Best Institute Outside Campus category. Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign was launched in 2024. Under JSJB Award 2025, each award-winning district received 50 lakhs as incentive. Which of the following are correct? Give me the answer. Odisha aims for 11 gigawatt green energy capacity by 2030. न्यूज रे कौन पाई अच्छी जो ओडिशा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहिले केवी सिंहदेव से अनाउंस करिसेंती कि स्टेट रो एम होची केमिति 11 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी अचीव करिवो इन 2030 ए जो स्टेटमेंट आसीची इट वाज मेड एट द ईस्टर्न इंडिया क्लीन एनर्जी समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय असोचम Odisha is promoting large scale investment in green hydrogen, green ammonia and renewable energy project. जो मैंने आंसर देइछथि वेरी गुड बैकग्राउंड इंडिया पुश करूची टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन बाय 2070 एटा समस्त जानथिबे जोटा कि एनकरेज करिची फर्दर स्टेट्स मानंगु टू अडॉप्ट एग्रेसिव रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स ओडिशा ट्रांजिशन करूची फ्रॉम अ मिनरल एंड इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी टू ग्रीन क्लीन एनर्जी हब ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 सी प्रोवाइड करूची इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज जो माने रिन्यूएबल रिसोर्सेस को अडॉप्ट करूचंदी एबे करंटली स्टेट एबे अप्रूव करिची सेवरल मेगा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोडक्शन यूनिट्स ग्रीन एनर्जी गोल ओडिसा रो एबे एम अछि 11 गीगावाट रो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय
के पर्यंत 2030 जाए. Key approvals recently, 53 ta green energy projects totaling 2000 megawatt around approve ହେଇଛି with investment of this much crore. এই ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଖାଲି ଜାଣିବେ କି ଏତିକିଟା ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଅଲରେଡି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛି. ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ammonia push, 16 major green hydrogen and ammonia projects worth this much lakh crore have already been approved. Major investor के JSW, Renew, Avada, these are the major investors. Support for households. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana under रे state 60,000 additional aid per household provide करुची apart from centers 76,000. Centers 76,000 तो provide करुची. Then state अलगा से 60,000 additional aid provide करुची per household. Okay. एम कौन कि 3 लक्ष household को 3 लक्ष household रे rooftop solar install करिवा. Land availability solutions, exploring the rail top solar, canal top solar and alternative land models. State ro clean energy vision रे industry minister संपत चंद्र स्वाई से emphasize करिसेंदी clean manufacturing, green ports and future ready workforce उपरे. Transmission infrastructure upgrade, ओडिशा को एतिकी crore investment आहुरी दरकार in power transmission by 2035. 25,000 crore require होची within the next 5 years alone. Advantage कौन accelerate करुची ओडिशार shift to clean energy economy. Large investment जो रहिला create jobs, boost industrial growth and attract global investors. Dependence reduce होची on fossil fuels and carbon emissions भी cut होची बा reduce होची. Benefits households through the affordable solar power, strengthens Odisha's position as renewable energy hub in eastern India, helps India achieve national climate commitments. डिसएडवांटेज होची कि लैंड एक्विजिशन और लैंड अवेलेबिलिटी गोटे चैलेंज. हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट दरकार फॉर ट्रांसमिशन एक्सपेंशन. इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट नीड्स स्टेबल पावर सप्लाई स्टेबल दरकार. स्किल गैप रही इन हैंडलिंग एडवांस्ड क्लीन टेक्नोलॉजीज. रिन्यूएबल एनर्जी वेदर कंडीशंस ऊपर डिपेंड करे एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस भी कॉस्टली. Attempt the MCQ. With reference to Odisha's green energy initiatives, consider the following statements. Odisha aims to achieve 11 gigawatt of green energy capacity by 2030. Under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, Odisha government provide kurchi additional 60,000 per household. Odisha requires 30,000 crore investment in transmission infrastructure by 2035. Abhitru kota correct habo. Correct, Sunita Raut. Very good. 126th birth anniversary of Dr. Hare Krishna Mahatab observed in Odisha. न्यूज रे अच्छी कि ओडिशा सेलिब्रेट करछि एबे 126 स्टेट लेवल बर्थ एनिवर्सरी ऑफ उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब एट रविंद्र मंडप भुवनेश्वर. आमर चीफ मिनिस्टर जे से अटेंड करथिले एज अ चीफ गेस्ट. बैकग्राउंड कोन डॉक्टर हरे कृष्ण महताब जांकर बर्थ 1899 रे हितला एंड ही डाइड ऑन 1987. से जने एमिनेंट स्टेट्समैन थिले, फ्रीडम फाइटर थिले, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा थिले आफ्टर इंडिपेंडेंस. रिमेंबर, आफ्टर इंडिपेंडेंस. आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओडिशा. These facts are very important. Remember them. Major institution and projects associated with his vision जेमती कि हीराकुद डैम, भुवनेश्वर सिटी, राउरकेला स्टील प्लांट, उत्कल यूनिवर्सिटी एंड ओडिशा हाई कोर्ट.
गवर्नमेंट रो जो इनिशिएटिव अछि से महताबंगर आइडियल्स को को इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट करूची जेमती पोवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स हे गला यूनिवर्सल हेल्थ केयर हे गला आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई गोपबंधु जन आरोग्य योजना women empowerment through subhadra yojana education reforms under the national education policy increased irrigation and livelihood security job creation initiatives highlight करा जाउची key infrastructural development जेमती capital region ring road project to boost the development around bhubaneswar and katak एडवांटेज कौन कि महताबंगर लेगेसी को प्रमोट करा जाउची ओडिशार पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल हिस्ट्री को ऊपर अवेयरनेस आना जाउची इंस्पिरेशन मिलुची यूथ मानंकु टू एंगेज इन पब्लिक सर्विस रिकॉग्निशन मिलुची स्टेट रो कल्चरल एंड लिटरेरी आइकॉन्स मानंकु हाईलाइट करा जाउची ऑनगोइंग गवर्नमेंट एफर्ट्स अलाइंड विथ द महताब्स आइडियाज जस्ट आइडियल्स रे को इनिशिएटिव्स फॉल करूची हमें प्रीवियस स्लाइड रे देखिले स्ट्रेंथन्स द कल्चरल प्राइड एंड यूनिटी. Practice this MCQ, give the answer. Consider the following statements about Dr. Hare Krishna Mahatab. He was the first Chief Minister of Odisha after independence. Hirakud Dam or Rourkela steel plant were established during his leadership. His birth anniversary celebration is organized by the Ministry of Home Affairs. Next, Green Hero Summit 2025 Uniting Climate Warriors in Odisha. न्यूज रे कौन पाई अछि जो ग्रीन हीरो समिट 2025 सेटा 23rd नवंबर रे कंडक्ट हेची बा हेल्ड हेची इट हेल्ड ऑन 23rd नवंबर अहेड ऑफ द 5th धरित्री यूथ कॉन्क्लेव ऑन नवंबर 24. क्लाइमेट एडवोकेसी ग्रुप यूथ लीडर्स और एनवायरमेंटल फिल्म मेकर्स ओडिसा रु आसी कि से माने पार्टिसिपेट करथिले. समिट रो एम हैला टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट एक्शन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन द स्टेट. बैकग्राउंड धरित्री यूथ कॉन्क्लेव एटा गोटे बहुत ही जनाशुना वेल नोन एनुअल प्लेटफॉर्म फॉर यूथ एंगेजमेंट ऑन डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड लीडरशिप. ग्रीन हीरो समिट जो रहिला सी जो क्लाइमेट वॉरियर्स रहिले से मन को एकाठी आने जेमती की क्लाइमेट एडवोकेसी ग्रुप्स एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस. द इनागुरल धरित्री क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल ए समिट रो भी गोटे पार्ट थिला. Films on environmental themes have been selected by the jury members. जो jury members थिले से सेई फिल्म्स को सिलेक्ट करूथिले जो गुडी को environmental themes ऊपर बेस्ड. ओके, फिल्म मेकर सुशांत मिश्र, स्नेहाशीष दास. ऑब्जेक्टिव्स कौन कि केमिति यूथ लेड क्लाइमेट एक्शंस को प्रमोट करा जिवो गोटे इकोसिस्टम एमिति बिल्ड करा जिवो फॉर आइडिया एक्सचेंज ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमंग द क्लाइमेट ग्रुप्स को मध्य केमती गोटे कोलैबोरेशन एस्टाब्लिश करा जिवो. क्लाइमेट स्टोरी टेलिंग क्रिएटिव क्लाइमेट स्टोरी टेलिंग को केमती शोकेस करा जिवो थ्रू शॉर्ट फिल्म्स. न्यू इनिशिएटिव्स को इंस्पायर करा जिवो जोटा कि फ्यूचर एनवायरमेंटल पॉलिसी को शेप करिवो. एडवांटेज हैला कि क्लाइमेट अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करा जाउची अमंग द यूथ एंड कम्युनिटीज. कोलैबोरेशन को एनकरेज करा जाउची बिटवीन एनजीओस, फिल्म मेकर्स, स्टूडेंट्स एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स. एक्शनेबल सॉल्यूशंस केमती जनरेट करा जिवो फॉर क्लाइमेट चैलेंजेस. क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को प्रमोट करा जाउची थ्रू फिल्म एंड आर्ट. लॉन्ग टर्म मोमेंटम बिल्ड होची फॉर लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन. यूथ मान को एनकरेज करा जाउची एंड लीडरशिप भी एनकरेज करा जाउची इन सस्टेनेबिलिटी. डिसएडवांटेज कौन कि जो आइडियाज जेनेरेट होची सेगुडी का सिंबॉलिक विदाउट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. जदि गोटे आइडिया जस्ट सिंबॉलिक ही है कि रही गला विदाउट एनी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ताले से आइडिया रो किछि मूल्य नाही. फंडिंग एंड सपोर्ट फॉर यूथ लेड क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स मे बी इनसफिशिएंट. जहाँ भी फंडिंग आउ सपोर्ट जेनेरेट होची क्लाइमेट लेड प्रोजेक्ट्स पई सेगुडी का इनसफिशिएंट हे पारे.
Outreach may be limited to engaged groups. Public may remain unaware. Coordination between multiple advocacy groups can be challenging. Long term sustainability of initiatives require continuous follow up. Attempt the MCQ. Consider the following statements about Green Heroes Summit 2025. A summit include करूची inaugural Dharitri Climate Film Festival, event 5th Dharitri Youth Conclave रो गोटे part. Only government agencies are participating in the summit. Very easy question. एथरू गोटे statement आराम से eliminate करी हबो. You have 10 seconds to answer. CUO UNICEF partnership to establish Tribal Communication Cell TCC. न्यूज रे कौन पाई अच्छी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा रहा सीईओ कोरापुट आउ यूनिसेफ ओडिशा से माने पार्टनर करछंती कोलैबोरेट करछंती गोटे ट्राइबल कम्युनिकेशन सेल एस्टाब्लिश करिया पाएंगे आउ ए जो इनिशिएटिव टा रहला ये फोकस करूची केमती ट्राइबल मानकर जो वॉइस बा ओपिनियन रहला सेगुडी को केमती स्ट्रेंथन करा जिवो प्रिजर्विंग इंडिजिनियस नॉलेज and promoting inclusive development in tribal regions of Odisha. बैकग्राउंड है कि ओडिशा रे बहुत गुड़े ट्राइबल पॉपुलेशंस अच्छंती जो मानकर गोटे रिच कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल नॉलेज से माने शेयर करती इफेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल्स बहुत एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रिजर्विंग ट्राइबल लैंग्वेज एंड कस्टम्स improving socio-economic conditions. UNICEF सी actively work करूची ओडिशा रे to support the child rights, tribal welfare and community capacity building. TCC जो रहिला गोटे ट्राइबल कम्युनिकेशन सेल जो एस्टाब्लिश हबो बा सेटअप हबो ए जो इनिशिएटिव रहिला एटा रिफ्लेक्ट करूची गोटे ब्रॉडर अप्रोच टू इंटीग्रेट द ट्राइबल पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपमेंट प्लानिंग. पर्पस कौन टीसीसी रो कि गोटे डायनामिक सेंटर प्रोवाइड करूची फॉर रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट गोटे कल्चरली सेंसिटिव आउ रूटेड कम्युनिकेशन मॉडल से क्रिएट करूची ट्राइबल्स मानकर जो वॉइस अच्छी तांकर ओपिनियन तांकर डिमांड्स जहाँ भी ताको प्रमोट करा जाउची इन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट डिस्कोर्स. यूनिसेफ रो कौन रोल रही ए इनिशिएटिव रे कि से टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करिवो गाइडेंस प्रोवाइड करिवो एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड करिवो स्ट्रेंथनिंग राइट्स आउ वेलफेयर ऊपर फोकस करा जाउची ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन एंड फैमिलीज. सीईओ रो रोल कौन कि से मैनेज करिवो आउ ऑपरेशनलाइज करिवो टीसीसी को कम्युनिकेशन सेल को थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. स्टूडेंट मानकर इन्वॉल्वमेंट को फैसिलिटेट करा जाउची आउ रिसर्च को भी फैसिलिटेट करा जाउची ऑन ट्राइबल इश्यूज. ऑब्जेक्टिव कौन एबे ट्राइबल कम्युनिकेशन सेल रो कि केमिति गोटे इंक्लूसिव कम्युनिकेशन एस्टाब्लिश हबो बिटवीन ट्राइबल कम्युनिटीज एंड पॉलिसी मेकर्स. इंडिजिनियस ट्रेडिशन और नॉलेज को केमिति प्रिजर्व करा जिवो ऑफ ट्राइबल पीपल. ट्राइबल कल्चरल एक्सप्रेशन और स्टोरीज और इश्यूज जहाँ भी रही ताको डॉक्यूमेंट करा जिवो. लोकल कैपेसिटी बिल्ड करा जिवो थ्रू ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स. एविडेंस बेस्ड इनसाइट्स जनरेट करा जिवो फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. मीनिंगफुल डायलॉग प्रमोट करा जिवो. पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट प्रमोट करा जिवो. सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को सपोर्ट मिलिवो फॉर ट्राइबल कम्युनिकेशंस. एडवांटेजेस कौन कि स्ट्रेंथन हबो ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस. प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन हबो एनहांस हबो ऑफ ट्राइबल कल्चर्स जहाँ ऑब्जेक्टिव से गुडी का एडवांटेज रे भी लिखि हबो. एनकरेज होची करा जिवो कल्चरली अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मेथड्स को. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी एटी प्रोवाइड होची स्टूडेंट और स्कॉलर्स मानक पई. चाइल्ड राइट्स वेलफेयर इनिशिएटिव्स को सपोर्ट मिलुची. ट्रस्ट गोटे बिल्ड होची बिटवीन कम्युनिटीज इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटी प्रमोट होची रूटेड इन लोकल रियलिटीज. डिसएडवांटेज ये कि जो इम्प्लीमेंटेशन टा रहिला आरो आ जो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस एटा कंटिन्यूअस फंडिंग आउ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऊपर डिपेंडेंट.
एंड डीप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चैलेंजिंग हे पारे काहे समस्ते मे भी पार्टिसिपेट न करि पारंती एथिरे लैंग्वेज बैरियर्स रहुची कल्चरल डिफरेंस रहुची जोटा कि स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर करूची ट्राइबल एरियाज जो रहिला दे मे फेस द लॉजिस्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स आउटकम्स जो रही रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन रो ताकू एक्टिव ट्रांसलेशन दरकार इनटू पॉलिसीज Give the answer of this MCQ with reference to the tribal communication cell being set up at the Central University of Odisha. Consider the following statements. TCC established through a partnership between CEO and UNICEF Odisha. Cell will function under Department of Journalism and Mass Communication. Primary objective होची TCC industrial investment provide करिबो in tribal regions. गोटे option एठू गोटे statement एठू आराम से eliminate करि हबो. Giving you 10 seconds ମୁଁ already hint देई सारलेनी. So जो माने भी online अछंदी attempt this question in the live chat. LRI Rath Yatra launched in 5 districts to promote scientific land use. Deputy Chief Minister Amara se gote land resource inventory LRI Rath Krushi Bhavan ru launch କରିଛନ୍ତି ବା he flagged off जो LRI यात्रा रही it has been launched across 5 districts of Odisha under the reward project. जो इनिशिएटिव टा रही से अवेयरनेस रेज करिवो among farmers about the scientific watershed management and the use of LRI cards. जो रिवार्ड प्रोजेक्ट अच्छी रिवार्ड रो फुल फॉर्म कौन रेजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट एटा गोटे पायलट प्रोजेक्ट जोटा कि लैंड और वाटरशेड मैनेजमेंट केमती इंप्रूव हबो ता ऊपर फोकस करे साइंटिफिक मैपिंग एथरे इन्वॉल्व करा जाउची फॉर लैंड बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स LRI Rath will travel for 1 month across the selected gram panchayats in Deogarh एतिकी पंचायत एठी लिस्ट अच्छी ये सब डिस्ट्रिक्ट रे ढेंकानाल रे एतिकी कोरापुट नयागढ़ एंड संबलपुर LRI कार्ड जो प्रोवाइड करा जिवो दे हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड बाय एनालाइजिंग द लैंड रिसोर्स डेटा LRI रथ बा वैन्स एगुड़ी कौन एगुड़ी हूँ मोबाइल अवेयरनेस यूनिट्स माने कौन करती अवेयरनेस प्रोवाइड करती बा एजुकेट करती फार्मर्स मानकू ऑन लैंड सुइटेबिलिटी एंड वाटरशेड मैनेजमेंट पार्ट ऑफ अ मंथ लॉन्ग LRI अवेयरनेस कैंपेन LRI कार्ड्स होची एटा डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूची ऑन सॉइल टाइप फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सुइटेबल क्रॉप सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड्स recommended treatments benefit to farmers help in scientific decision making for crop selection fertilizer management soil conservation and water conservation practices जो डायरेक्टरेट अच्छंती डायरेक्टरेट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट से डिस्ट्रीब्यूट करूछंती तीन ए कार्ड को अंडर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट बाकी एक्टिविटीज कौन रही प्रोग्राम अंडर रे जेमती कि दीटा नुआ माइक्रो वाटरशेड वर्क भूमि पूजन लॉन्च होची LRI महोत्सव फॉर मास अवेयरनेस श्रमदान एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पानी की पाठशाला वाटर एजुकेशन सेशंस इनॉग्रेशन ऑफ कंप्लीटेड वाटरशेड प्रोजेक्ट्स फार्मर्स मानकू फेलिसिटेट करा जिवो जो मानकू बेनिफिट मिली फ्रॉम LRI कार्ड यूजेज पंचायत लेवल क्विज कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट हबो फॉर स्टूडेंट्स ऑन सॉइल एंड वाटरशेड मैनेजमेंट मॉनिटरिंग मूवमेंट ऑफ LRI रथ ट्रैक्ड भाया MIS मोबाइल एप्लीकेशन advantages scientific farming promote hoji and enhance hoji knowledge about land suitability it improves the crop productivity through precise soil and fertilizer recommendations farmers mananku help miluchi to reduce their losses by choosing appropriate crops
Watershed management strengthen होची and improve the water availability. Community participation encourage होची, awareness encourage होची, sustainable agriculture को support मिलुची, long term soil health को भी support मिलुची. Disadvantages कौन कि farmers जो रहिले remote areas रे सेमान को difficulty face करिया को पड़ी पारे under understanding the technical terms କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏତେ ୱେଲ୍ ଭର୍ସଡ୍ ନଥାନ୍ତି ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଥାନ୍ତି ଲିଟରେଟ୍ ନଥାନ୍ତି ସୋ ଦେ ମେ ଫେସ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଲ୍ଆର୍ଆଇ କାର୍ଡସ୍ ରିକ୍ୱାୟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ରେନିଂ एलआरआई कार्ड्स को केमती इफेक्टिवली यूज करेंगे से कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग दरकार कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स भी दरकार लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स डिपेंडेंस ऑन डिजिटल टूल्स may limit the participation in low connectivity areas success depends on strong coordination between departments and field workers MCQ for practice with reference to the land resource inventory LRI Rath initiative in Odisha consider the following statements जो LRI Rath यात्रा रहिला सेटा reward project under a launch ହେଇଛି LRI card helps the farmers understand land suitability and recommend treatments movement of LRI Rath is monitored through a dedicated MIS mobile application which of the above statements are correct 1 or 2 2 3 1 3 1 2 3 answer in 10 seconds 10 seconds starts now सिक्स्थ ओडिशा विकास कॉन्क्लेव ओवीसी 2025 न्यूज रे कोन पई अछि सिक्स्थ ओडिशा विकास कॉन्क्लेव 2025 इनागुरेट करजंती चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा इवेंट टा हाइलाइट करूची देयर इज नीड फॉर स्ट्रांग पार्टनरशिप कम्युनिटी लेड प्लानिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट for the coming decade. Conclave focuses on the theme balanced development and climate resilience. Background हो कि Odisha faces emerging challenges such as climate risk, changing livelihood patterns, demographic transitions. जो community level institutions रहिले जेमति कि जो self help groups SHGs से माने गोटे critical role play करूचंती in improving service delivery and reducing the distress migration. OVC 2025 jointly organize करूचंती Odisha Development Initiative CYST and various partner organizations. और ये जो conclave टी रहिला से 15टा thematic sessions को feature करूची across 5 pillars जोड़िक रिलेटेड अच्छी गवर्नेंस इकोसिस्टम सोशल लीडरशिप क्लाइमेट जस्टिस एंड वल्नरेबिलिटी रिडक्शन उपरे कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट कौन चीफ सेक्रेटरी आमर आहूजा सी एम्फसाइज करिसेंती डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग स्ट्रेंथनिंग लोकल इंस्टीट्यूशंस एसएचजी लेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स कन्वर्जेंस बिटवीन गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी एकेडेमिया एंड मार्केट फोर्सेस उपरे बैलेंस डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलिएंस रो फोकस एरियाज कौन फॉरेस्ट coasts, wetlands, livelihood, governance, social protection systems, technology driven development, etc. जो last mile communities should be treated as partners, not just beneficiaries. Climate transition जो रही just and just transition I forest director सीए emphasize करूचंती on the importance of just transition recognized at COP30. Odisha must ensure livelihood protection in coal dependent areas, mining regions. Transition must be people centric and equitable. Demographic shift जेमती UNFPA Odisha तांकर हेड सी हाइलाइट करछन कि ओडिसा रो जो टोटल फर्टिलिटी रेट रही छी सेटा 1.6 जोटा कि बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल by 2041 state enter करिजिबो गोटे नेट मोर्टालिटी जोन रे मोर डेथ देन बर्थ्स आर चैलेंज रही कि एजिंग पॉपुलेशन राइजिंग द डिसेबिलिटी प्रिवेलेंस देन नीड फॉर द न्यू पब्लिक हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज एक्सपेक्टेड आउटकम कौन ओवीसी 2025 रो कि ओडिशा क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ब्रीफ मिलिबो रिपोजिटरी ऑफ लोकल लेड क्लाइमेट रेजिलिएंट सॉल्यूशन ready for scaling, strengthened collaboration between government NGOs, academic institution and private sector. Advantage कौन कि गोटे holistic development promote होची linking the ecosystem, livelihood and governance. Community based institutions strengthen होची and decentralized planning strengthen होची. Odisha prepare होची for its climate impact with locally rooted solutions. Then inclusive economic transitions facilitate होची in coal and resource dependent regions.
एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को एनकरेजमेंट मिलूची थ्रू रिसर्च एंड पार्टनरशिप्स डेमोग्राफिक चैलेंजेस भी एड्रेस होची एथिरे अंडर द न्यू गवर्नेंस एंड हेल्थ स्ट्रेटजीज डिसएडवांटेज कौन एथिरे इंक्लूड रही कि जो इम्प्लीमेंटेशन जस्ट ट्रांजिशन एटा रिक्वायर करूची फंड एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्लाइमेट रिस्क एथि रहउची जेमती साइक्लोन फ्लड बा हीट वेव्स हे गला कि जे कोनोसी नेचुरल कैलामिटीज हे गला एड प्रेशर ऑन द वल्नरेबल कम्युनिटीज कोऑर्डिनेशन बिटवीन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स कैन बी डिफिकल्ट जो वेरियस स्टेक होल्डर्स रहिले डिपार्टमेंट्स बा पर्सन्स रहिले सेमानकर भितर जो कोऑर्डिनेशन रही सेटा सबुबले सेम न रही पारे it can be difficult. Demographic challenges may strain the healthcare and pension systems. Local communities माने जो रहिले सेमानको extensive training दरकार for meaningful participation. Attempt this MCQ. Consider the following statements regarding Odisha Vikas Conclave 2025. ओडिशा विकास कॉन्क्लेव 2025 ର थीम होची बैलेंस डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस ओडिशा रो टोटल फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हे जाईची 2.3 को एज पर द रिसेंट डेटा कॉप 30 रिकॉग्नाइज करिची जस्ट ट्रांजिशन एज अ ग्लोबल प्रायोरिटी व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टार्ट्स नाउ Moving forward, tribal art form edital gains global recognition. एटा बहुत important prelims ପାଇଁ कि न्यूज रे कोन पई अछि कि जो ट्रेडिशनल ट्राइबल वॉल पेंटिंग रहिला ताकू इडिटाल कहउचंती सेटा क्रिएटेड बाय सौर्य ट्राइब ऑफ ओडिशा Saura tribe of Odisha, sorry, has received global recognition for its unique artistic style and deep spiritual symbolism. ये जो ancient art form रही थी ये cultural, religious and ecological world view को reflect करुची of the Saura community. Background कौन कि जो इडिटाल it comes from the Saura words इदी माने होची पेंटिंग ताल होची वॉल ट्रेडिशनली एटा मड बा प्लास्टर्ड वॉल्स रे ए पेंटिंग टा करा जाई थाए ऑफ होम्स इन ट्राइबल एरियाज सौरा ट्राइब से माने पर्टिकुलरली कौन करंती जो माने रिसाइड करंती इन रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट रे दे आर नोन फॉर देयर रिच कल्चरल प्रैक्टिसेस इन नेचर वर्शिप ए जो आर्ट टी रहिला एटा प्रिजर्व एबे हेई कि अछि केवल फ्यू विलेजेस हियर एंड देयर जेमति कि पुत्ता सिंह हेला सगड़ हेला ओके ए सो विलेजेस रे मटेरियल और टेक्निक कौन यूज करती से माने राइस पेस्ट को यूज करती आर्ट करबा पई कि अप्लाइड विथ थिन बैम्बो स्टिक्स को यूज करिकी जो राइस पेस्ट से माने बनैतिबे ताकू यूज करिकी से माने आर्ट करती बिगिन्स विथ अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फ्रेम इनसाइड विच सीन्स ऑफ नेचर एनिमल गोटे रेक्टेंगुलर फ्रेम रे से माने स्टार्ट करती और रेक्टेंगुलर फ्रेम भितरे से माने जो वेरियस सीन्स पेंट करती जेमति कि नेचर हैला एनिमल ह्यूमन सिंबॉलिक एलिमेंट्स आर पेंटेड Paintings rarely show gods directly. Instead, they use metaphors from daily life to represent divine forces. Directly से माने gods paint करंती नी instead से जो daily life रू जहाँ divine forces को से माने represent करी परिबे they use those metaphors for it. Spiritual and cultural significance कौन created during auspicious occasions, illness in the family, केतबळे एटा क्रिएट हुए किछि ऑस्पिशियस ओकेजन रे भलो ओकेजन रे जेतबळे फैमिली रे किए इल थांदी इलनेस इन द फैमिली हाउसहोल्ड रिचुअल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस कौन कौन रिप्रेजेंट हुए डेटीज एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स नेचर फोर्सेस सौरा माने से माने बिलीव करंती कि स्पिरिचुअल जो फोर्सेस जो इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्सेस सेटा सिए लाइफ और फॉर्च्यून को से माने गवर्न करंती से माने कंट्रोल करंती इन्वोक्ड टू प्रे फॉर वेलबींग रिकवरी फ्रॉम इलनेस प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसफॉर्च्यून प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी जो रिचुअल प्रैक्टिसेस रहिला रिचुअल लीडर्स जेमति कि मेल प्रिस्ट
Kudan Ganmar, and female priest Kudan Gboy. Rituals include animal sacrifice भी एथरे include हुए, local brew offer हुए, then dance and music भी एथरे include हुए. Paintings typically created between Falguna and Boisakha month. Role of ancestors को honor करा जाए as guiding spirits. Painting often portray them symbolically. ଯାହା ବି ହାର୍ଭେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଫର ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଲ୍ଡ ଦ ଇଦିତାଲ. ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କ'ଣ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ହେରିଟେଜକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ନଲେଜ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରୁଛି, କଲଚରାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି, ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ରହିଲା ତାକୁ ଅଫର କରୁଛି ଫର୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆର୍ଟିସନ୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ କଲଚରାଲ ଟୁରିଜମ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ସ, serves as a medium to teach younger generation about the traditional values and ecological harmony. Disadvantage বা চ্যালেঞ্জ কোন ଅଛି କି এই जो आर्ट फॉर्म रहिला एटा रेयर with few practitioners left. Modernization and migration have reduced the cultural transmission, limited awareness outside the tribal regions, institutional support रे lacking ଅଛି for preservation and documentation, risk of commercialization ଅଛି during the cultural authenticity. MCQ attempt करो. Consider the following statements regarding the tribal art form Idital. Idital painting ସେଗୁଡ଼ିକ traditionally create କରାଯାଉଛି using rice paste applied with the bamboo sticks. Art form is unique to the Sora tribe of Raigada district in Odisha. Idital directly depicts deities and gods. এটা ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଠି କହିଛି directly depicts deities and gods through detailed human figures. ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଏଠୁ ଗୋଟେ statement ଏଠୁ ଆରାମସେ eliminate କରିହେବ. 10 seconds starts now. 26th Odisha Science and Environment Congress begins with focus on SDGs. 26th Odisha Science and Environment Congress inaugurate ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ. Event also marked the International Conference on Science and Technology Innovation for Sustainable Green Frontiers. Congress focus କରୁଛି on critical role of science and technology in achieving UN Sustainable Development Goals or SDGs. Background ହେଲା कि जो event ଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଏଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି. ଥିମ୍ କ'ଣ 2025 ପାଇଁ ଥିମ୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ. ଲେଟ୍ ମି science and technology innovation. Theme hochi science and technology innovation. Remember this theme. Over 450 delegates eti participate karitile from across India and abroad are attend karibe. Congress aims to promote scientific discourse, environmental protection, technology driven sustainable development. Advantage rahila ki jo collaboration को strengthen करुछि among the scientists, policy maker, academics and environmentalists. Awareness and research को drive करुछि towards achieving the SDGs by sustainable development goals. Innovation encourage होची in cocoa areas, green technology, clean energy, waste management. ଗୋଟେ platform provide होची for scientific contributions like the new chemistry award. Youth and researchers motivate होचंदी to take up climate and sustainability challenges. ओडिसा रो role enhance होची national and international scientific forums. Disadvantage कोन रही एथिरे कि जो implementation gap गोटे रहउची between what between scientific recommendation and ground level execution. गोटे sustained funding need ରହିଛି for research in green technologies. Public awareness on SDGs remain limited in many regions. Environmental challenges like waste pollution and climate change require the long-term strategies. Collaboration between academia, industry and the government needs constant strengthening.
MCQ practice 26th Odisha Science and Environment Congress upare kichta statement eti achi. Attempt this MCQ. Congress was jointly organized by Odisha Environment Society and KIT University. Annual chemistry award worth 1 lakh was announced by KIT to honor the lifetime achievements. Event focused on primarily on cultural heritage preservation under the SGF scheme. Kon abar answer? Revival of near extinct native silkworm. ଗୋଟେ silkworm କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ନେଟିଭ୍ ସିଲ୍କୱାର୍ମ ସ୍ପିସିସ୍ ଯୋଉଟାକି ପାଖାପାଖି ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସୁକିନ୍ଦା ଇକୋରେସ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲିଡ୍ କରୁଛି ୱିଥ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଲ୍କ ବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ CTRTI ସେ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ରିଭାଇଭ୍ ଦ ନିୟର ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ସୁକିନ୍ଦା ଇକୋରେସ୍ ଗୋଟେ ନେଟିଭ୍ ଟସର ସିଲ୍କୱାର୍ମ ସ୍ପିସିସ୍ a mid-term review by IUCN India से इटा देखिचंती कि जो प्रोजेक्ट टा रहिला it aligned with the IUCN global standard on nature based solutions and awarded it adequate rating. Project scored 60%, well above 25% of minimum threshold. Ecological restoration कौन 26 hectares रे होची degraded forest land restore ହେଇची replenishing of Arjun and Asan trees, essential host plants for the tussar silkworm, restored forest patches now as biodiversity corridors, carbon sinks, and revived habitat for the native silkworm species. Background Sukinda icorace eta gote trivoltine tussar silkworm native to the mixed deciduous forest of Sukinda in Odisha. Traditionally ये सपोर्ट करुची ट्राइबल एंड रूरल लाइवलीहुड्स को फॉर जनरेशंस आर डिक्लाइन रो कॉज कौन थिला कि इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल सिल्कवर्म strains, habitat loss, degradation of the host plants, loss of traditional sericulture practices. As a result कौन हैला कि जो species reached the verge of extinction impacting both biodiversity and local livelihoods. Community empowerment. Over 200 household एथरे involve ହେଇଥିଲେ 50 household plantation activities रे ଆଉ 150 household sericulture activities रे traditional livelihood revive होची एथरे tied to sericulture and forestry economic viability एटा को conservation को financially sustainable बनौची ensures income through the silk production plantation management sustainable harvesting demonstrates how ecological restoration can support the local economies alignment with national and global goals align होची SDG 1 संगरे जोटा जहार गोल होची नो पोवर्टी SDG 13 रो फोकस कोन क्लाइमेट एक्शन ऊपर SDG 15 लाइफ ऑन लैंड सपोर्ट करूची नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान को टाटा ग्रुप्स आलिंगन सस्टेनेबिलिटी विजन को एटा फॉलो करूची IUCN assessment. IUCN India से validate करची यार scientific approach, community involvement, ecological outcome को rated the project as adequate across 8 NBS nature based solution assessment criteria. Advantage होची कि एटा near extinct native silkworm species को revive करूची जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम थिले जो ताकू रिस्टोर करूची बायोडायवर्सिटी एनहांस करूची सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेट करूची फॉर ट्राइबल एंड रूरल हाउसहोल्ड्स कम्युनिटी ओनरशिप को स्ट्रेंथन करूची ऑफ इकोलॉजिकल एसेट्स क्लाइमेट रेजिलियंस को सपोर्ट करूची थ्रू एफोरेस्टेशन एंड कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन मॉडल फॉर कॉर्पोरेट लेट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्रिएट करूची डिसएडवांटेज हैला कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ रिस्टोर्ड फॉरेस्ट सेटा गोटे प्रॉब्लम रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन ताकू दरकार नेटिव स्पीशीज जो रहिले नेटिव स्पीशीज रो रिवाइवल से काइंड ऑफ स्लो थाए और वल्नरेबल थाए टू द क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रो डिपेंडेंस dependence on community participation any drop can affect outcomes commercial pressure जो रही high yield hybrid silkworms कर सेटा it still persists requires sustained financial and institutional support
MCQ for practice with reference to the Sukinda Ecorace Conservation Project. Consider the following statements. Project aims to revive a near extinct trivoltine tussar silkworm species native to Odisha. Project has been assessed by IUCN India aligns with the global standard on nature-based solutions. Project local communities को exclude करूची from direct involvement to ensure faster ecological recovery. Which of the following statements are correct? Odisha IT Policy 2025 aims to create 1 million jobs. Odisha IT Policy 2025 discuss ହେଇଛି assembly ରେ where the Electronics and IT Minister Mukesh Manhaling announce କରିଛନ୍ତି କି ପଲିସିର ଏମ୍ ହେଉଛି କି କେମିତି 1 million but 10 lakh employment opportunities create କରାଯିବ in the near future during its policy period. Policy align ହେଉଛି with Odisha's Vision 2036 and Vision 2047. बैकग्राउंड कौन इंडिया एबे विटनेस करूची इंडिया एबे देखुची कि रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस होची अक्रॉस द कंट्री जोटा कि आईटी आउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करिची एज की ग्रोथ ड्राइवर्स ओडिशार एम होची कि ता निजको से पोजीशन करिवो एज अ मेजर आईटी एंड इमर्जिंग टेक हब इन द ईस्टर्न रीजन. Odisha IT Policy 2025 it provides a structured framework to attract the investments, promote innovation, build skilled manpower, strengthen the IT infrastructure. Employment generation target होची कि 1 million jobs केमती create हबो in the IT and the ITES sectors. Focus रही कि केमिति digital services expand हबो IT parks, tech hubs and skill developments. Promotion of emerging technologies. ये जो policy टा रहिला policy incentivizes innovation in artificial intelligence, machine learning, cyber security, blockchain, data analytics, cloud computing, automation, etc. Multi-tier governance structure. High level committee chaired by the chief secretary. Responsible for the policy oversight, approval for the special packages, policy advocacy of vision group जेमती कि गोटे think tank हिसाब रे act करूचंती, mid course correction provide करूचंती and strategic inputs भी दउचंती. OCAC Odisha Computer Application Center गोटे nodal agency implementation पाई supported by the project implementation and management units. Investors and industry facilitation. Go Swift single window portal ये end to end investor support provide करुची, project tracking, grievance redressal provide करुची, 3-tier clearance system अच्छी जोटा कि ensure करुची केमती small, medium और large scale projects को faster approval मिलिबो. Implementation support, monitoring mechanism, comprehensive monitoring mechanism से माने provide करुचंदी for policy execution. Guidelines, operational guidelines prepare करुचंदी to be published shortly. Policy aims to ensure the transparency, accountability and ease of doing business. Advantage कौन केमती substantial employment create हबो employment opportunities for youth. Odisha IT ecosystem केमती boost हबो, digital infrastructure केमती enhance हबो, global and domestic IT investment केमती attract हबो, innovation केमती encourage करा जिवो through emerging technologies, improves governance effectiveness through strong monitoring frameworks, supports skill development and capacity building. Disadvantage कौन केमती large scale skilling दरकार आकु to meet the job creation targets. Competition from established IT hubs like Bengaluru, Hyderabad and Pune. Infrastructure gaps रही in smaller towns may slow the expansion. Digital divide between urban and rural region एबे भी persist करुचे. MCQ टा attempt करो. Consider the following statements regarding Odisha IT Policy 2025. Policy रो aim होची कि केमिति 1 million employment opportunities create हबो in the IT sector.
Policy Advocacy and Vision Group will act as think tank for course corrections. OCAC is the nodal agency responsible for implementing the policy. Correct कौन होगा? Yes, जो मैंने आंसर दूचंदी very good. The detailed answer and explanation will be discussed in the next class. Odisha emerging as clean energy destination EY Asocham report. गोटे जॉइंट EY Asocham report release ହେଇଛି जे स्टेट करूची कि ओडिशा एबे रैपिडली गोटे इंडिया रो मोस्ट प्रॉमिसिंग क्लीन एनर्जी हब हबाकू जाउची. ए रिपोर्ट टी हाइलाइट करिची ओडिशार स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल पोटेंशियल, पोर्ट इकोसिस्टम एंड इंडस्ट्रियल बेस एज की ड्राइवर्स. इंडिया रो एम कोन अचीव करिया पई कि केमिति से 450 प्लस गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करिवो, नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 केमिति अचीव हबो, मेजर क्लीन एनर्जी माइलस्टोन्स बाय 2030 केमिति अचीव हबो. ओडिशार स्ट्रेटेजिक कोस्टल लोकेशन एंड मिनरल रिच इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम position it strongly for green hydrogen, renewable energy, clean manufacturing, energy storage. Strong clean energy potential, solar, wind, hydro resources across the state. Massive potential tara achi for green hydrogen and green ammonia production. 34 gigawatt pumped storage potential रही जोटा कि enable करूची 24/7 renewable power, grid stability, energy storage transformation, strategic पोर्ट इकोसिस्टम जेंती पोर्ट्स हमर रहिला पारादीप, धामरा, गोपालपुर सेटा ओडिशा को गोटे मेजर एक्सपोर्ट एडवांटेज प्रोवाइड करूचंदी. enables the export of green hydrogen and green ammonia. Key markets कोन जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन यूनियन. इंडस्ट्रियल बेस एंड डिमांड सर्ज. ओडिशा गोटे इंडिया रो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल क्लस्टर भितरु गोटे. स्टील, एल्युमिनियम एंड केमिकल्स रे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक्सपेक्ट करा जाउची कि सी 10,564 मेगावाट को रीच करि जिवो बाय फाइनेंशियल ईयर 2033-34. आउ ए जो राइजिंग डिमांड को मीट करिवा पई कि स्टेट को 26,237 मेगावाट रो additional contracted capacity दरकार in the next decade. Opportunity कौन रही for green manufacturing hub, clean energy projects under evaluation by global players, potential to develop green industrial clusters, energy storage systems, hydrogen and ammonia export terminals. Policy and governance recommendations. गोटे स्टेट एनर्जी प्लानिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट एस्टाब्लिश हबो जोटा कि फोकस करिवो रिन्यूएबल एनर्जी प्लानिंग उपरे, पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम्स उपरे, हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉरिडोर्स उपरे, पोर्ट बेस्ड ग्रीन इंडस्ट्रीज उपरे, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे, लैंड पूलिंग एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन उपरे. ओके, एडवांटेज कोन कि ये ओडिशा को से पोजीशन करिवो लीडिंग क्लीन एनर्जी एक्सपोर्टर इन द ईस्टर्न इंडिया, enhances industrial competitiveness through affordable renewable energy, opportunities create करा जाउची for job creation, global investment, sustainable economic growth, support करूची इंडिया रा climate and energy goals को, strengthen करूची grid stability through the pumped storage and hybrid renewable systems. Disadvantage कौन कि एथिपाई massive investment दरकार. First of all, massive funds दरकार आपाई for transmission infrastructure, port upgrades, renewable integration, land pooling और community approval रे delay आसी पारे. Upfront cost, first of all, सेटा high है पारे for the hydrogen production and storage. Global market uncertainties भी रही that affect the export vitality. Need for the skilled workforce and advanced technology adoption भी अच्छी.
With reference to Odisha's clean energy prospects highlighted in EY Asocham report, consider the following statements. Odisha has an estimated pumped storage potential of 34 gigawatt. The state electricity demand is projected to peak at over 10,000 megawatt by financial year 2033 and 34. Odisha has no significant opportunity for hydrogen and ammonia exports due to lack of ports. कौन आ भितर करेक्ट अच्छी 1 and 2 2 3 1 3 or 1 2 3. Odisha extends enhanced Manrega support till 28-29. न्यूज रे कौन पाई अछि ओडिशा गवर्नमेंट से अप्रूव करिसेंती कि जो एनहांस्ड मनरेगा ताको एक्सटेंड कर दिया जाऊ अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2028 टू 29. आउ ए जो मूवटा हेची इट एम्स टू स्ट्रेंथन द रूरल लाइवलीहुड्स एंड कर्ब द डिस्ट्रेस ड्रिवन माइग्रेशन लोकली एज दादन. Over 5.57 lakh families across 30 blocks in 9 districts से मानको बेनिफिट मिलिबो. बैकग्राउंड होची कि मनरेगा जे की गारंटी करे कि 100 डेज रो वेज एम्प्लॉयमेंट मिलिबो टू रूरल हाउसहोल्ड्स. ओडिशा इंट्रोड्यूस करिछि एनहांस्ड स्टेट सपोर्ट टू इंप्रूव द वेज सिक्योरिटी एंड रिड्यूस माइग्रेशन. बहुत गुडे रूरल हाउसहोल्ड्स अछंती जो माने एबे भी स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन सीजनल वर्क पुशिंग देम टू माइग्रेट आउटसाइड द स्टेट. तो बाध्य होई कि से माने स्टेट बाहर को माइग्रेट करछंती. The extension aligns with Odisha's development vision, Vikasita Odisha for Vikasita Bharata. Explanation of the concept enhanced मनरेगा support. First की increased work days. Eligible household माने तांकू एबे 300 days रो wage employment per year मिलिबो instead of 100 days. एटा मन रखिबे ऑप्शन रे याकू 200 को 250 days एम्ति करी कि दे देथिबो जानि सुनि भूल करिया को. Additional wage support भी provide होची जेमति कि first 100 days पई की state provide करछि additional okay include नुआ इतरे additional 98 rupees per day over the standard मनरेगा वेज. रिमेनिंग आउ जो 200 दिन रहिला सेतरे रेगुलर मनरेगा वेज जोटा थिला कंटिन्यू हबो. एडिशनल टा प्रोवाइड हबनी और सप्लीमेंटरी स्टेट सपोर्ट मिलिबो. ओके सो कवरेज कोन रही 5.57 लाख रूरल फैमिलीज बेनिफिट पाइबे. आउ इंप्लीमेंट हबो केतरे 30 ब्लॉक्स रे अक्रॉस 9 डिस्ट्रिक्ट विथ हाई स्ट्रेस माइग्रेशन. की फोकस एरियाज कौन कि जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होची दादन ताकू प्रिवेंट करा जिवो. लाइवलीहुड सिक्योरिटी एनश्योर करा जिवो विद इन द विलेज. रूरल इनकम्स को स्ट्रेंथन करा जिवो. लोकल एम्प्लॉयमेंट को एनहांस करा जिवो. इक्विटेबल एंड ग्रासरूट लेड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करा जिवो. लीडरशिप एंड इम्प्लीमेंटेशन इनिशिएटिव लेड बाय चीफ मिनिस्टर मोहन चरण माझी. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर रवि नारायण नायक. ओके सो मिनिस्टर जो नायक हमर रहिले सी एम्फासाइज करछंती कि केही भी माइग्रेंट वर्कर ताको फोर्स करा जा परिबनी कि से ओडिशा छाड़ी की जाऊ फॉर द बेसिक लाइवलीहुड नीड्स. एडवांटेज कौन कि गोटे स्टेबल आउ एश्योर्ड इनकम एथरे प्रोवाइड होची टू रूरल फैमिलीज. स्ट्रॉन्ग डेटरेंट अगेंस्ट द डिस्ट्रेस माइग्रेशन को एथरे टोटली भी सपोर्ट करा जाऊ नहीं. उल्टी कहा जाउची कि केमिति डिस्ट्रेस माइग्रेशन को केमिति रोका जाई परिबो. परचेसिंग पावर बूस्ट होची लोकल रूरल इकोनॉमी रो. एनहांस रेजिलियंस ऑफ द वल्नरेबल कम्युनिटीज.
helps secure the rural poverty and income insecurity. Economic activities को promote हबो within villages, creating the secondary employment. Disadvantage ବା challenge कौन कि जो financial burden रहिला सेटा high अछि on state government काना सी further financial aid भी provide करूची ना over मनरेगा से additional aid provide करूची, support systems provide करूची. Timely wage payment केमती ensure हबो कि को डेट ରୁ को डेट भिତରେ सब समस्त को wage मिली जिबा दरकार, सेटा गोटे problem. सेथि पई कि strong administrative coordination दरकार, जोटा कि वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स भितर न रही पारे. रिस्क ऑफ मिसयूज और फेक जॉब कार्ड्स इन सम रीजन्स. मस्ट इनश्योर प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन, नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. खाली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उपरे फोकस कले तो डेवलपमेंट हबनी स्टेट रो कि कंट्री रो. प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन उपरे मध्य इनश्योर करा जिबा दरकार, एम्फसाइज करा जिबा दरकार. मॉनिटरिंग वर्क क्वालिटी अक्रॉस द 30 ब्लॉक्स कैन बी चैलेंजिंग. 30 ब्लॉक्स गोटे बहुत ही वाइड एरिया हो जाउची टू कवर. सो वर्क कोठी केमिति चलीची ताको मॉनिटर करिबा एफिशिएंटली सेटा चैलेंजिंग हेई पारे. Attempt this MCQ with reference to enhanced Manrega support extended by Odisha government. Consider the following statements. Eligible households will receive 300 days of wage employment annually. State will provide an additional 98 per day for the 100 days of work. The initiative aims to eliminate distress migration, locally known as the Dadan. Which of the statements are correct? Correct kona is statement with 10 seconds re answer karo, and your 10 seconds starts now. न्यूज रे कौन पाई अछि जो ओडिशा इंस्क्रिप्शंस रहला. ओडिशा इंस्क्रिप्शंस डिस्कवर्ड इन बिरूपा चित्रोत्पला बेसिन. किछि ओडिशा इंस्क्रिप्शन डिस्कवर हेछि इन बिरूपा चित्रोत्पला बेसिन. ओडिशा इंस्क्रिप्शन जो एंशिएंट ओडिशा इंस्क्रिप्शन रहला फ्रॉम द गंग एंड सूर्यवंशी गजपति पीरियड्स सेको एबे डिस्कवर करा जाइछि एट द बिरूपा चित्रोत्पला रिवर बेसिन ऑफ ओडिशा. एंड ए जो फाइंडिंग रहला इट शेड न्यू लाइट ऑन कल्चरल पॉलिटिकल एंड एपिग्राफी हिस्ट्री ऑफ रीजन. बैकग्राउंड होछि कि जो इंस्क्रिप्शन दे वर फाउंड ड्यूरिंग अ जॉइंट सर्वे. जेतबेले गोटे जॉइंट सर्वे कंडक्ट होतिला बाय रीडिस्कवर लॉस्ट हेरिटेज ग्रुप RLH Group, Silver City Cuttack SCC Public Charitable Trust, कलिंग एपिग्राफिकल रिसोर्स सोसाइटी KERS. ये जो सर्वे लोकेशंस गोपीनाथपुर, किशिनापुर, भद्रेश्वर एंड केंदुपटना एटी कंडक्ट होतिला. and the team led by names are not important. Explanation कि केंदुपटना इंस्क्रिप्शन एटार मेजर हाइलाइट कौन फाउंड ऑन पेडेस्टल ऑफ द मेन आइडल ऑफ लक्ष्मी नारायण टेम्पल एठी मिलिछि. एथिरे दीटा लाइन अछि मिक्स ऑफ ओडिया एंड संस्कृत. टेक्स्ट पार्शियली डैमेज टेक्स्ट. ओके एंड एस्टिमेट हेछि कि 14th through 15th century जो इंस्क्रिप्शन टा मिलिछि इट बिलोंग टू 14th to 15th century CE बेस्ड ऑन पैलियोग्राफी. हिस्टोरिकल एट्रीब्यूशन कौन कि लेटली
likely dates to the reign of Ganga ruler Narasimha Deva IV, 1377 to 1414 CE. Sri Vishwanatha mentioned may refer to the Srikara Vishwanatha Mahasenapati, jane prominent official thile Ganga dynasty ର ତାଙ୍କର mention ଏଥିରେ ରହିଛି. His name appears in the Simhachalam inscription and the Siddheswar temple. Additional to inscription मिलिची किछि नुआ inscription मिलिची from Suryavamshi Gajapati period documented. Survey uncovered inscriptions in Gopinathpur, Kishinapur and the Bhadreswar temple. An estampage of Bhadreswar inscription will be included in the upcoming compiled book. Archaeological importance कौन कि गोटे नुआ insight provide करुची into temple patronage, administrative structure, architectural phases, cultural developments during Ganga and Gajapati eras. Highlights the importance of Kendupatana and surrounding areas of the historical centers. Advantage कौन कि strengthen करुची ओडिशा medieval history को, understanding of Odisha's medieval history, helps reconstruct the genealogy and administration of Ganga and Gajapati rulers. Heritage conservation को support करुची, documentation efforts को भी support करुची, archaeological tourism को promote करुची in the river basin areas, academic research को encourage करुची in epigraphy and regional history. କିଛି disadvantage ବି ରହିଛି ୟାର, ଯେମିତି କି ଯୋଉ inscription ଗୁଡ଼ା ମିଳିଛି they are damaged, eroded and partially illegible. ଓକେ, ଇଲେଜିବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଇଲେଜିବଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ପଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ. ସୋ ଦେ ଆର୍ ପାର୍ସିଆଲି ଇଲେଜିବଲ୍, ମାନେ କିଛି କିଛି ପଢ଼ି ହେଉଛି, କିଛି କିଛି ପଢ଼ି ହେଉନି, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆଉ ଏରୋଡେଡ୍, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍. ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଆକ୍ସେଲରେଟ୍ସ ଡିଟୋରିଏସନ୍. ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ କନଜରଭେସନ୍ର ଲ୍ୟାକିଂ ସେଟା ଫର୍ଦର କ'ଣ କରିବ? ଡେଟୋରିଏସନ୍ ବା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବା ଏରୋଜନ୍କୁ ସେ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସେଲରେଟ୍ କରିବ ବା ବଢ଼େଇବ. ନିଡ୍ ଫର୍ ଗ୍ରେଟର ଫଣ୍ଡିଂ. कंजर्वेशन पाई कि फंडिंग दरकार, आउ सेटा भी लार्ज अमाउंट रे, एक्सपर्ट मैन पावर दरकार कि केमिति कंजर्व करा जाई परिबो बेटर वे रे, एंड एक्सकावेशन परमिशंस दरकार गवर्नमेंट थारू. लोकल अवेयरनेस अबाउट हेरिटेज प्रिजर्वेशन रिमेन्स लो. जो लोकल पीपल माने रहिचंदी तांकर जो अवेयरनेस अछि कि हेरिटेज को केमिति से माने प्रिजर्व करिके रखि परिबे, तांको पाखरे एते भी अवेयरनेस बा एजुकेशन नाही regarding heritage preservation. Riverine erosion may destroy hidden archaeological material if not preserved in time. MCQ टा एठी आंसर करो. With reference to the recently discovered inscriptions in the Birupa Chitrotpala river basin, consider the following statements. ये जो inscription रहिला से primary belong to the Ganga and Suryavamshi Gajapati periods. Kendupatana inscription is written entirely in Sanskrit. मु just एबे पढ़ेली कि को कोथरे सेटा लेखा हिची. The inscription likely belongs to the reign of Narasimha Deva IV. Brand in India conclave, curtain raiser held at IIM Sambalpur.
IIM Sambalpur in collaboration with Retailers Association of India RAI host କରିଛି Brand in India Conclave Cotton Razor इवेंट रे IIM Sambalpur साइन करथिला गोटे MOU Memorandum of Understanding with the Indian Institute of Mass Communication New Delhi and ढेंकानाल ये जो कॉन्क्लेव रो कॉन्क्लेव हाइलाइट କରିଛି इंडिया रा इवॉल्विंग ब्रांड आइडेंटिटी एंड सेलिब्रेटेड रीजनल एंटरप्रेन्योरल सक्सेस स्टोरीज बैकग्राउंड कौन जो आईआईएम संबलपुर रहा है इंडिया गोटे प्रीमियर बी स्कूल बिजनेस स्कूल्स नोन फॉर इट्स इनोवेशन एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन आईआईएमसी गोटे टॉप नेशनल मीडिया इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड ये जो कनक्लेवटा कंडक्ट होती तार एम हो केमी इंडिया ब्रांड इकोसिस्टम फर्दर स्ट्रेंथन हम एंड कोलैबोरेशन प्रमोट हम बिटवीन मैनेजमेंट मीडिया रिटेल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एडवांटेज कौन कि एकेडमिक कोलैबोरेशन एथरे एनहांस होची बिटवीन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इंडिया रो ब्रांडिंग स्ट्रेंथन होची मार्केटिंग कैपेबिलिटीज भी स्ट्रेंथन होची इंडस्ट्री एकेडेमिया नॉलेज एक्सचेंज होची एटा को एनकरेज करा जाउची फर्दर स्टूडेंट्स माने एबे स्किल्स गेन करि परिबे इन मीडिया ब्रांडिंग एंड कम्युनिटी सेक्टर्स रिसर्च एंड इनोवेशन प्रमोट होची इन इमर्जिंग एरियाज लाइक डिजिटल मार्केटिंग रीजनल एंटरप्रेन्योर्स जो माने रहिचंदी सेमान को सपोर्ट प्रोवाइड होची बाय शोकेसिंग देयर ब्रांड्स डिसएडवांटेज एंड चैलेंजेस कौन रही कि जो जॉइंट प्रोग्राम्स रहिला तार जो इम्प्लीमेंटेशन टा रहिला ता पई स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन दरकार सस्टेन्ड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन रो नीड दरकार फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्स फॉर फैकल्टी एक्सचेंज एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड तार जो सक्सेस सेटा डिपेंड करूची ऑन कंटिन्यूअस एंगेजमेंट बियॉन्ड MOU signing. Singhdeo calls for adoption of climate resilient farming techniques. Deputy Chief Minister से farmers, scientists and stakeholders मान को urge करिसेंती कि केमिति natural and climate resilient farming techniques को से माने adopt करिवे during the state level World Soil Day celebration. Focus करा जाइछि on preserving soil fertility, promoting sustainable agriculture, स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी वर्ल्ड सॉइल डे ये सब प्रतिवर्ष सेलिब्रेटेड एनुअली जो थे अवेयरनेस रेज हुए अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम एंड ए वर्षर थीम कौन थिला हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज इंपोर्टेंट सॉइल क्रुशियल फॉर फूड सिक्योरिटी एनवायरमेंटल बैलेंस क्लीन एयर एंड वाटर अर्बन सस्टेनेबिलिटी Odisha has been strengthening soil testing infrastructure and scientific nutrient management. Appeal for climate resilient farming. Singhdeo and also Minister for Agriculture and Farmers Empowerment से अपील करिसेंती केमिति केमिकल इनपुट्स रो यूज को रिड्यूस करा जाऊ ऑर्गेनिक मैटर को प्रमोट करा जाऊ नेचुरल फार्मिंग को वाइडली अडॉप्ट करा जाऊ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो हो एम कोन कि केमिति सॉइल रो फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट करा जिवो फॉर फ्यूचर जनरेशंस इट मींस आउ आमे को कोन लिखि परिबा sustainable use of soil ओके इम्पोर्टेंस कौन सॉइल हेल्थ रो एते जो सॉइल विषय रे कथा से माने कहउचंदी इनिशिएटिव्स रहउचंदी सॉइल रो इम्पोर्टेंस कौन हेल्दी सॉइल डिस्क्राइब्ड एज लाइफलाइन ऑफ एग्रीकल्चर फाउंडेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी बेडरॉक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉइल रो हेल्थ बहुत ही एसेंशियल इवन इन एक्सपैंडिंग द अर्बन स्पेसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करा जाउची फार्मर्स माननकू टू प्रमोट साइंटिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बेनिफिट्स रे कोन कोन इंक्लूड होची कि प्रिसाइज नॉलेज ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस सॉइल रे केते मात्रा न्यूट्रिएंट्स अछि ता ऊपर गोटे प्रिसाइज नॉलेज प्रोवाइड होची क्रॉप वाइज फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस भी इंक्लूड करा जाउची एथरे improved soil fertility and reduced input cost government initiatives strengthening soil testing labs across Odisha knowledge gaps को केमते bridge करा जिवो among farmers encouraging adoption of sustainable farming technologies leadership remarks these remarks are not important just skip them advantage कोन कि long term soil fertility केमते improve होबो productivity केमते improve होबो डिपेंडेंस केमती रिड्यूस होबो ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मोर ऑन मोर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स थ्रू केमिति
प्रोडक्शन हब क्लाइमेट रेजिलियंस एनहांस होची एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एनहांस होची हेल्थियर इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलूची इन बोथ रूरल एंड अर्बन रीजन्स फार्मर्स मान को एम्पावर करा जाउची थ्रू साइंटिफिक सॉइल मैनेजमेंट थ्रू सॉइल हेल्थ कार्ड्स प्रमोट्स रूरल सस्टेनेबल क्रॉप प्लानिंग एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट यूज डिसएडवांटेज कौन चैलेंजेस कौन रहा कि गोटे ट्रांजिशन फ्रॉम केमिकल बेस्ड टू नेचुरल फार्मिंग इनिशियली रिड्यूस द यील्ड्स रिड्यूस करि पारे से कहीं केमिकल बेस्ड दो इट इज हार्मफुल टू हेल्थ किंतु सेतरे कोन होतला फार्मर्स मानको को बहुत यील्ड मिलुतला जेतेबेले से हठात स्विच करी जिवे नेचुरल फार्मिंग को ए जो ट्रांजिशन रे इनिशियली कोन हो इनिशियल इयर्स रे एतेटा प्रोड्यूस हबनी जेतेटा केमिकल फर्टिलाइजर्स देले प्रोड्यूस होतला सो फार्मर नीड्स ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट कहीं से माने गोटे मेथड रो आ गोटे मेथड को स्विच करूचंदी अडाप्ट करबा पई कि तांकु ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस सपोर्ट दरकार फार्मर्स मानकु नेचुरल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट मेथड्स में रिक्वायर मोर लेबर एंड टाइम जो नेचुरल और क्लाइमेट रेजिलिएंट मेथड्स रहिला तांकु इम्प्लीमेंट करबा पई कि अधिका लेबर और अधिका टाइम दरकार अडॉप्शन मे बी स्लोअर इन रीजन्स विथ इनएडिक्वेट एक्सटेंशन सर्विसेज एमिति किछि रीजन रही छि जोठी कि एक्सटेंशन सर्विसेज एतेटा एडिक्वेट नाही तो से सब एरियाज रे अडॉप्शन तांकर स्लो हे पारे Soil testing infrastructure needs continuous strengthening. MCQ. With reference to World Soil Day celebration in Odisha, consider the following statements. Theme hochi healthy soils for healthy cities. Soil health cards were distributed to farmers to encourage scientific nutrient management. Singdev advocated for increased chemical fertilizer usage to boost soil fertility. This is a very easy question. Gote eliminate kole answer hi asijibo. मते लागुनी याकू 10 सेकंड्स भी दबा दरकार 5 सेकंड्स रे आंसर समस्ते देई परिबे एतरे So that is it for today. तो आज आमे 21 डेज रो करंट अफेयर्स आमे कवर कले नेक्स्ट वीक रू वीकली चलिबो सो जहाँ भी मुझे पढ़ेली तार पीडीएफ आपण माने डाउनलोड करि परिबे कमेंट सेक्शन रो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक एंड जहाँ भी मुझे पढ़ेली आई होप समस्ते नोटबुक एंड पेन नहीं कि बसिथिबे बा आईपैड जो माने डिजिटल नोट्स नउचंती सो से माने pointers नहीं थिबे and I would highly advise to jot down the pointers and certain facts for quick revision before prelims and mains बाकी पीडीएफ तो प्रोवाइड ही होची किंतु निज तरफ रो भी किछि हार्ड वर्क करंतु एंड जो माने लाइव क्लास अटेंड करूनांती दे कैन आल्सो वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर एंड जहाँ भी मुझे एमसीक्यू डिस्कस करिछि रिकॉर्डेड लेक्चर रे ट्राई करंतु कि कमेंट सेक्शन रे ताको आंसर करिवे जो माने लाइव चैट रे आंसर करिसंती वेल एंड गुड जो माने रिकॉर्डेड देखिबे से माने कमेंट सेक्शन रे आंसर करिवे एंड डिटेल आंसर एंड एक्सप्लेनेशन मु नेक्स्ट क्लास रे प्रोवाइड करिवी ओके थैंक यू फॉर वाचिंग